Hey guys, welcome back to my channel. This is Aman and I hope you all are doing good. So today I'm showing you the hotel JW Marriott, which is in Delhi Aerocity. So without wasting any time, let's get started. So they welcome us with red roses, and from here the entry of this hotel begins. Here is the waiting area and luggage counter, and towards the right is the waiting lounge, and behind that there is Jelly Baking Company coffee house. This is their lobby area, and this is check-in counter. Opposite to this counter is lobby sitting area. There is outdoor sitting area too, which I'll show you super soon. This is lobby den, which is again a waiting lounge. Right now I'm standing in K3 restaurant lane, which I'll visit tomorrow for breakfast. And this is wholesome lobby view. Now I'll show you outside view from the lobby. At its right is the courtyard area and playground bar. This is K3's outer sitting area, and I'm in love with this view. Now this is K3 restaurant's another entry. This area is well lit up in the evening, which makes it all the more beautiful. Now let's move towards the room and I'll show you my room. So this is my room and this is on the 5th floor, which is the second last floor here. So this is my room, which is a premier room with a pool view and a king size bed. मैं आपको pool का view दिखाता हूँ. वो पीछे पूल है और ये किंग साइज बेड. तो मैं आपको पहले अपना पूरा रूम दिखाता हूँ. उसके बाद फिर हम अभी 3 बज रहे हैं तो 4 बजे 4 साढ़े 4 5 बजे के करीब हम चलेंगे नीचे पूल में और थोड़ी सी स्विमिंग वगैरह करेंगे. उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जिम और उसके बाद फिर नीचे सारी रिसेप्शन वगैरह और सब मैं आपको पूरा होटल का वॉक थ्रू करवाता हूँ. तो शुरू करते हैं. After entering into the room, I got this hand sanitizer, mask and a packet of sanitizing wipe at the table. And in this room we have king size bed, TV and a DVD player, lounge chair, and on bedside table we have an alarm clock. And last but not the least, the mini bar in which we have cold drinks and beer cans. In the wardrobe we have got one iron table, shoe bag, empty box, one bathrobe, and behind the bathrobe we have one umbrella. And in the starting we have closet for storage and slippers. Now let me show you the bathroom area. So we have got this spacious shower area with a huge bathtub, bathroom amenities, and we also have the swing machine, bathroom vanity, So guys,
गाइस, अब मैंने चेंज कर लिया और अब मैं जा रहा हूँ नीचे जिम करने। स्विमिंग पूल मैं आपको दिखाता हूँ कल सुबह, क्योंकि इस समय अभी ऑलरेडी लोग हैं नीचे। अगर मैं नीचे गया तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको एक बार यहीं से दिखा देता हूँ एक ग्लिम्स। आप देख सकते हो कि कुछ लोग हैं नीचे, हालांकि ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग हैं जिनकी वजह से मैं नीचे जाके शूट नहीं कर पाऊँगा। तो मैं सुबह शूट करूँगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिम। और जिम जाने से पहले मैं आपके साथ बस वही एक बात शेयर करूँगा कि यस, यही वजह है जो मुझे और रोजेट बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उसका जो पूल था वो प्राइवेट था। तो अब नीचे कोई क्या कर रहा है हम अपने व्यू अपने रूम से इजीली देख सकते हैं, बट वहाँ पर वो पूरी प्राइवेसी मिलती है हमें। वो टेरिस पर है और वहाँ पर कोई भी देख नहीं सकता कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। वेल, अभी हम चलते हैं जिम में और वहाँ जाके फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। मैं मास्क लगा लेता हूँ। मैं आ गया हूँ इस समय जिम में और आप देख सकते हो जिम बाहर स्विमिंग पूल है। So come on, let's start exercising. When you are using treadmill, you get such a pleasant view. I'm going back now. अब जिम कर लिया, मैं वापस जा रहा हूँ। So I'm back in my room and मेरे लिए यहाँ पे 2 कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स आई हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये चॉकलेट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स तो ठीक है, बट एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये थी कि जब मैं अपने रूम में नहीं था, पीछे से स्टाफ आके ऐसे चॉकलेट्स मेरे रूम में एंटर करके वो चॉकलेट्स चक्कर चले गए। वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई है, क्योंकि मेरे लगेजेस वगैरह सब ऐसे ही खुले थे, मैंने पैक भी नहीं किए थे। सो ठीक है। जब मैंने ताज विज़िट किया था तो मुझे तब भी कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स मिली थी, पूरी एक ट्रे थी चॉकलेट्स की। और यहाँ मुझे ये 2 चॉकलेट्स मिली है। आई एम ईटिंग दिस चॉकलेट और ये चॉकलेट काफ़ी ही अच्छी है। इसके अंदर कुछ कैरेमल है, काफ़ी टेस्टी है। मैं इस समय जा रहा हूँ फार्मेसी, इधर वर्ल्ड मार्क में ही है, क्योंकि मेरे विजडम टूथ में बहुत पेन हो रहा था। तो मैं अभी इस समय मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। तो होटल वालों के पास तो नहीं थी। रोजेट के सबसे पास है वर्ल्ड मार्क 1, इसके बिल्कुल साथ आपको रोजेट होटल मिलेगा। 98.4 योर कैम्स लाइफ। तो गाइस, अगर आपको कभी ऐसे इमरजेंसी में मेडिसिन लेनी हो तो आप इधर 98.4 वर्ल्ड मार्क 1 में आ सकते हो। और जैसे ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही 200-300 मीटर है होटल JW मैरियट से, और रोजेट के तो बिल्कुल साथ में ही है मोरा रोजेट। अब हम चलते हैं वापस होटल। अब मैं वापस होटल जा रहा हूँ। तो वो हयात का अंदाज होटल है, ये JW मैरियट है। और अगला मेरा जो व्लॉग आएगा वो उसमें आएगा अंदाज होटल का। मैं आपको पूरा अंदाज होटल दिखाऊंगा। Next morning, I'll be taking you near swimming area. This is Swan Spa, and again this is on 2nd floor. So gym, spa and swimming pool all are on 2nd floor. There is open shower in front. This is jacuzzi. Here you can take sun bath after swimming. As it's an open shower, so it's your wish if you want to take it as per your comfort. Now the time is 7 AM and I am here at K3 restaurant for breakfast. And like every time, I'm gonna have croissant and omelette. Omelette was so delicious and full of cheese.
So guys, for today that was it. I hope you like the video. So guys, if you like the video, please share, subscribe and comment.